चलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो इसका मतलब ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं सीधे ही। जरा कैमरा ऑन करो सभी, कैमरा ऑन। चलो लाइट आ गई अभी, इसलिए मैंने सोचा हम कर सकते हैं क्लास। वैसे भी वो काफी लंबा है, जो मूड्स थ्योरम का प्रूफ है। तो हम वैसे क्या करने वाले हैं, we want to show that there is a subsequence of these monomials तो we want to show that a subsequence of monomial, जिसको मैं कहूंगा, कैसे करें हम, ठीक है, we want to show that जैसे L201 में L201 जो हमारा स्पेस है, हम दिखाना चाहते हैं, we already know that this is a total sequence in this space x, x2, so on and so forth. We will show that actually this, ये तो है ही, this is a total sequence here. We want to show that any sequence xn1 comma इसकी subsequence is total in L201 if and only if जो ये summation 1 by nj है, this diverges, j runs from 1 to infinity. Of course n1 is less than equal to n2, but this is a subsequence of the natural numbers, which means this is a subsequence of the original sequence of monomials in x. That's what we want to do. Now इसके लिए हमने क्या किया था, हमने ये projection length from a subspace to, this was the shortest distance from a point y to a subspace इसको कहाँ करना है, okay, to a subspace M, subspace M of say L201, actually किसी के लिए भी true है, Hilbert space के लिए, from a point y to a subspace M of L201 is, this is the shortest distance, where P is the projection from L201 to this subspace, and I am on to map, so that is linear and continuous and idempotent, and we know what's a projection. So ये करने के बाद we want to evaluate it, what would be this like. Now since we know that py minus y belongs to M perp, and if M is a finite dimensional space spanned by xi, I runs from 1 to n, then p of y जो होगा, it would be summation ai xi, I runs from 1 to n, where ai's are scalars, I runs from 1 to n. That means ये जो summation ai xi minus y belongs to M perp, I runs from 1 to n. If M is this space, the finite dimensional space, then since P of y must be like this, why? Because what? Because P of y belongs to M. Reason is P of y जो है, it belongs to M, which is span of these n vectors, which is therefore it must be a linear combination of xi's. तो अगर ये M perp में है, then it is perpendicular to every vector inside M, in particular these xj's. So it means that summation ai xi
minus y comma xj dot product should be 0. वो मैंने गलत लिखा है, should be ej for all j running between 1 and n, which means that summation, sorry मैंने गलत लिखा, xj होना चाहिए, वो तो स्केलर है. So it means summation ai xi xj should be equal to yx. So these are n equations. और last time हम यहाँ पे गए थे तो मैंने कहा था हम इसको लिखेंगे in terms of the matrix. उसमें कोई दिक्कत नहीं थी बेसिकली, क्योंकि जो g हमने डिफाइन किया था वो एक डिटर्मिनेंट है, यू नो, ग्राम डिटर्मिनेंट. सो अगर उसको ट्रांसपोज करेंगे डिटर्मिनेंट को तो वो तो सेम है, उसमें क्या फर्क आएगा. तो वही मुझे लगा था. I can write it as, let me write it as, this is x1, as a system of equations. X1, then I should have x1, पहले 1 लेते हैं, then I should have x2, x1 up to xn, xn. इसी तरह से then I would have x1, x2, x2, x2. Then I should have, sorry, यहाँ 1 होना चाहिए, xn, x2, and similarly so on and so forth, x1, xn. इसको मैं से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख सकता हूँ. x, let me write it. Then I should have x, मैंने 1 1 1 है तो यहाँ भी 1 ही आएगा. Then I should have xn, of course this xn, xn. ये तुम आराम से अब चेक कर सकते हो. This is indeed this matrix equation. यहाँ पे a1, a2 up to an. अब इसमें लिखना जरा, is equal to y x1, y x2, so on and so forth. But you know what I mean. y x, तो इस तरह से सिचुएशन है. ओके, सो इसके बाद यहां तक हमने किया था. सो देन सिंस डिटर्मिनेंट जो इसका है इस मैट्रिक्स का, ने यहाँ पे जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनी वो बराबर है डिटर्मिनेंट x1, x2, x1 है, then x2, x1, so on and so forth. Then I have xn, x1, similarly x1, x2, 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 xn, x2, so on and so forth. Then x1, xn, x2, xn, so on and so forth. x n, xn, ये जो है this is the same thing as g, because अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. अगर हम रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेगा सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स की. इट शुड बी द सेम वन एज x1, 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 x2, so on and so forth, xn, सॉरी x1, xn. इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूं x2, x1, यानी मैं दूसरे कॉलम को दूसरा रो बनाऊंगा, x2, 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 xn, xn, x1, xn, x2, xn, xn, which is the gram determinant. लेकिन ग्राम डिटर्मिनेंट ये भी है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो सो दिस इज g जो हमने डिफाइन किया था. सो बजाय ये लिखने के मैं इसको g कहूंगा, ठीक है ना, मैं इसी को g कहूंगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है. मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू 0. व्हाई? हमने एक थ्योरम किया था g इज नॉट इक्वल टू 0 इफ दीज वेक्टर्स आर, ठीक है ना. तो मैं इस सिस्टम का नाम देता हूं सिस्टम 1. ये जो यहाँ पे है ना ये सेट ऑफ इक्वेशंस,
ठीक है ना? Since this is not equal to 0, therefore यहाँ साइड में तुम लिखोगे since x1 up to xn is a linearly independent set. So a linearly independent set है, तो ये तुम समझ रहे हो ना? मैंने इसको जी माना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द सेम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोजिशन से। अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मैं इसी को जी मान सकता हूँ। So it's because it's linearly independent, so this is not equal to 0. Therefore, system 1 has a unique solution given by the Cramer's rule. बस इतना ही हमें करना है। Therefore, system 1 has a unique solution given by, ये हमें करना था बेसिकली, is equal to g sub I by g। g मेरा मतलब ये है, यानी जो हमने ओरिजिनल डिफाइन किया था उसका ट्रांसपोज, लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Where gi is the determinant obtained by replacing the ith column of G by the column जो यहाँ पे है, यानी y x1 y x2 से मुझे इसको रिप्लेस करना है। मतलब दैट्स जस्ट क्रेमर्स रूल, जो तुमने पता नहीं कब किया है, ग्रेजुएशन से भी पहले स्कूल। So these scalars can be evaluated like this. बस मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता था शुरुआत में। Furthermore, ये जो मेरा d है, d square equal to ये जो लेंथ है, जो मिनिमाइज डिस्टेंस y minus p of y, it is equal to, इसको हम कर सकते हैं, अगर मैं ये स्क्वायर लूं, दिस इज इनर प्रोडक्ट y minus p of y, y minus p of y, कहाँ जाएगी? एक मिनट, अब हम जरा इसको इवैल्यूएट करेंगे। ओके, it is equal to, let's do it. This is basically y minus py comma y minus py। हाँ बिल्कुल सही। नाउ py जो है वो, नाउ सिंस मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, दिस इज y, नहीं मैंने गलत डेफिनेटली किया। इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड ऐसे करते हैं, तो दिस हैज टू बी y minus py minus y। अब ये तो होगा 0 बिकॉज py जो है वो मेरी सब स्पेस जो है स्पैन ऑफ xi को बिलोंग करता है, i runs from 1 to n, जिसको मैंने नाम दिया था थोड़ी देर के लिए m, एंड ये जो y minus py है ये इसके m perp को बिलोंग करता है। तो अगर चूंकि ये m perp में है और ये m में है तो ये 0 हो जाएगा। So therefore you would get just y minus ypy, राइट। सो ये तो होगा सिंपली नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, और ये जो है दिस इज माइनस, ये क्या मिलेगा हमें, दिस इज बेसिकली y को ऐसे ही रखेंगे हम, और इसको एज यूजुअल रखेंगे हम, समेशन ai xi, I runs from 1 to n, that is equal to norm of y square minus summation, yes, summation ai y xi, I runs from 1 to n। ठीक है, तो ये करने के बाद, बट वी नो दैट दिस इज एक्चुअली नॉर्म ऑफ y स्क्वायर माइनस ai को हमने अभी बताया था इज इक्वल टू gi by i, जो ना हमें पता है ग्राम डिटर्मिनेंट वगैरह, gi by g
Let me write it as summation I runs from 1 to n gi by g y xi. Okay, so once we have there, दो और आगे रो में के लास्ट पे कौन आता है? Okay, this is what I have. Now I have this जो distance है मेरी वो है in terms of numbers. मुझे gram determinants ढूंढने हैं. I runs from 1 to n gi by g of course y xi. Xi's are known, y is known, so if they are known, I'm saying. So the question is about gi by j. Now let, अब ये important है. Let g plus be the gram determinant of the vectors y, x1, x2, xn. मैंने इसको y को उसके साथ adjoin किया. We show that g plus by g is equal to d square. d square इसके बराबर है ना, यानी ये हम दिखाएंगे ये सारे का सारा is actually g plus by g. So that's the idea. That's equal to norm of y square minus summation I runs from 1 to n a sub I y xi. तो ये हम दिखाना चाहते हैं. Now g plus हमें पता ही है कि अब g plus by g किसके बराबर होगा? g plus divided by g is 1 by g into gram determinant of these vectors y to xn. So it should be as per our definition yx1, नहीं yy पहले होना चाहिए, yx1, it would be an n plus 1 order determinant. You can say n plus 1 vectors हैं. Then I should have yx2, then at the end yxn. इसी तरह से फिर होना चाहिए x1 y, then x1 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 x2, then x1 xn, then I should have x2y, x2 x1, x2 x2, then इसी तरह से x2 xn, so on, और लास्ट पे हम जाएंगे xn y, xn x1 xn x2 and xn xn. So this is the determinant g plus. Now if you expand it, this would be 1 by g, right? पहले तो अगर मैं इसको expand करता हूँ, let me see हम कैसे expand करेंगे. Along first row लें या along first column, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लेंगे first row. Expanding along first row, अगर हम इसके क्या बोलते हैं, okay, 1 by g. पहले naturally you would see what would you get. This would be norm y square, ये number into this determinant, है ना, minor है इसका. और अगर तुम देखोगे ये minor क्या है, x11 x12 x1n, this is just g. second one होना चाहिए minus, उसके बाद minus आएगा, तो m1 अगर मैं लिखूं, यानी m1 का है, अगर मैं along first row जा रहा हूं, expanding the determinant along first row, चलो मैं लिख देता हूं, expanding the determinant, ये हमारा थोड़ा सा calculations है, along first row it would be some m1 और साथ में आएगा first row है तो yx1, then it should be plus m2, इसी तरह से होता है ना, yx2, of course yx2 है वो minor जो वहां बचेगा, plus so on and so forth. Then I should have minus 1 raised to power n mn yxn. अब मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूँ,
ये जो MIs है इनका GIs के साथ कनेक्शन है, लेकिन वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, डू इट योरसेल्फ। देन MI, ये जो MI है इट इज -1 I raised power -1 into GI. Now that's easy to check that M1 is the same as G1 because M1 होगा, M1 का मतलब है ये और ये रो और ये कॉलम डिलीट करो, वहां क्या बचेगा, और बाकी जो माइनर बचेगा that will be just G1, यानी it is just changing। चलो मैं लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ, बाकी तुम सब करोगे। So this would be, because M1 is equal to yx1 yx2 up to yxn, then I have x2 x1 up to xn x1, and ठीक ही है, मैंने गलत तो नहीं लिखा, फिर से देखते हैं, x1 x2 ठीक है, x1 xn, या अगर हम पहले कॉलम से कर देते तो बेहतर है, क्योंकि वहां मैंने जी लिया है ट्रांसपोज, इसलिए मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि हम क्या करें। हाँ बेटर रहेगा, क्योंकि वहां हमने जी को ट्रांसपोज दिया, अलोंग फर्स्ट कॉलम कर दो यार, क्योंकि फिर तुम्हें बोलोगे नहीं अलोंग फर्स्ट कॉलम ही कर दो, ठीक है। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं अल्टीमेट रिजल्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये उसके साथ मैच हो जो हमने वहां जी लिया था, क्योंकि जी को हमने ट्रांसपोज लिया, मैंने बोला ना कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो M1 किसके बराबर होगा, अगर मैं अलोंग फर्स्ट कॉलम इसको एक्सपेंड करता हूँ, यानी मुझे ये रो और ये कॉलम को नहीं मानना, सो आई वुड गेट, जरा देखते हैं, आई वुड गेट दिस थिंग yx1 yx2 yxn, और साथ में फिर क्या आएगा x2y x22 x2y, ये कहाँ से आ गया x2y, मैंने तो इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट किया मैंने, तो बचा क्या, yx1 आ गया पहले, फिर आएगा x2 x1 x2 x1, then I have x3 x1 आ गया, x2 x1 x2 x2, अरे अरे अरे, x2 x2 so on and so forth, लास्ट वाला क्या बचेगा, x2 xn, x2 xn, इसी तरह से I should have so on and so forth, xn x क्या है 1 x1 x1 है ना, नहीं yes sir नहीं x xn x1 है ना, मैंने इसको नहीं, अरे मैंने गलत किया, ये ना इस पे नजर मत रहती है मुझे। सो आई गॉट yx1 yx2 पहला वाला, इसको और इसको मैंने डिलीट किया, नहीं इसको और इसको मैंने डिलीट किया, तो बचा क्या yx1 x2 x1 xn x1, ठीक है xn x1 है यहाँ पे, दूसरा क्या बचा, xn x2 नहीं ये और ये डिलीट हो गया, तो इट शुड बी yx2 x2 x2, ठीक है xn x2, ठीक है xn x2, और ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर होना चाहिए xn xn, वेरी गुड, बट दिस इज द सेम थिंग है, इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूं, दिस इज एक्चुअली yx1 yx2, ये स्टेप मैं करना चाहता था, ये ट्रांसपोजिशन का, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोज है तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इट इज x2 x1 नहीं x2 x2, ठीक है ठीक है ठीक है, then I have x2 x2 and x2 xn, then I have xn is so on and so forth, x1 xn x2, I hope अब ये क्लियर है, xn xn, और मैं ये बता रहा हूँ इट इज द सेम एज G1, G1 मतलब पहले G को हमने ट्रांसपोज किया था, फिर उसका जो ना वहां हमने G लिया था, तो तुम ये चेक कर सकते हो, इसी तरह से तुम देख सकते हो M2 इज एक्चुअली -1 into G2,
वो तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो, मैंने जनरली ये लिख दिया, ठीक है ना। तो विच मीन्स दैट अगर ऐसा है, सो देन आई वुड हैव, सो g प्लस बाई g इज इक्वल टू, तुम देख सकते हो, so that g plus by g is equal to 1 by g into norm of y square into g minus g1, right, x1 क्या था इसका, yx1 था, I think बिल्कुल yx1 था, yx1 माइनस g2 yx2, क्योंकि वो इस सबको माइनस बना देगा, वो जो साइन है ना साथ में, एंड माइनस जो तुम चेक कर सकते हो, मैं चाहता हूँ तुम्हें वेरीफाई खुद करो, क्योंकि इस पे करना ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशंस, क्योंकि पिछला पेज देखना। सो दैट इज इक्वल टू नॉर्म y स्क्वायर माइनस समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n gi by g yx, तो यही था मेरा मेन काम, which is the same as norm of t square. So once I did this, तो हमारा preliminary काम थोड़ा खत्म हो गया, तो we can now approach our, this is the, मतलब ये जो distance होती है, this is actually gram determinant of, मतलब what is this, this is g of x1 y, x1 x2 up to xn, where xn are the subspace, और y से हम ले रहे हैं वो projection to that subspace generated by x1 by x, और एक्चुअली अगर तुम बुक में लिखोगे वो डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि ये इसके बराबर होगा, हमने इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो gram determinant of these vectors divided by gram determinant of these vectors would give us the shortest distance from y to the span of xi runs from 1 to 1. ये हमारा मेन टूल है मूड्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए, हालांकि उसमें भी हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। So should we first state it now? Statement of the theorem. अब हम मूड्स थ्योरम को प्रॉपर्ली स्टेट करेंगे और फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे। Let's state मूड्स थ्योरम. After this preliminary work, Moore's theorem says a necessary and sufficient condition and sufficient condition for the set of monomials Tn1, comma Tn2, so on and so forth, where 1 is less than n1 is less than equal to, is less than equal to इस तरह से, तो एक सब सीक्वेंस है उनकी, कहने का मतलब to be complete in L201 is that summation 1 by ni is equal to infinity, and it diverges. हाँ जरा इसमें चूंकि 1 नहीं आया, क्योंकि हमने इसको 1 must be added in case of, क्यों अगेन वो सबसीक्वेंस ही होगी C01, इसमें 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि वो redundant हो जाएगा. As you can see, we can get 1 from, one can be seen as some limit of the polynomial जो already है in L2 now, so 1 would be there, no issue. Okay, now the completeness अब हम use करेंगे, अब हमारा जो tool है proof. Now the completeness holds, अब हम क्या करेंगे, completeness holds or totalness, whatever, holds if and only if for m greater than 1 equal to 1, m not equal to ni,
for any I running from 1 to so on and so forth, the minimal distance dk, minimal distance d sub k of this t raised power m, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, from the subspace generated by tm1 comma up to tmk approaches 0 if as approaches, मैंने क्या लिखा, approaches 0 as k approaches infinity. अब हम क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि देखो मैं लूंगा मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम t raised power m to the span of say x and I runs from 1 to k, ठीक है, एक्चुअली t raised power n I वही ना, जो चलो मैं यहाँ रब करता हूँ जस्ट टू कंफ्यूजन में हो जाए, t n I। अब मैंने क्या लिया, मैंने इनका फाइनाइट सेट लिया और फिर देखिए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस t raised power m where m is any power of t but it does not belong to these ni's, क्योंकि वरना मिनिमम डिस्टेंस तो जीरो होगी। तो मैं क्या करूंगा, ये ti इनसे बाहर है because it is none of the ti's and it is therefore since this forms a linearly independent set, monomials form a linearly independent set, so this does not belong to span of these vectors, right? Now what I do, मैं इसमें बढ़ाते जाऊंगा, स्पैन में वेक्टर्स बढ़ाते जाऊंगा। अगर ऐसा हो कि ये मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाए, जैसे ही ये सारे के सारे जो मेरे सब सीक्वेंस है इसको बिलोंग करें, अगर ये मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाए इन नॉर्म, इन वही ना, मिनिमम डिस्टेंस इन नॉर्म मींस द डिस्टेंस गिवन बाय द नॉर्म इन L201, अगर वो जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब tm would then belong to, तभी तो डिस्टेंस जीरो होगी, span of tn1 tn2 so on and so forth up to infinity। अगर हमने ये दिखा दिया कि ये ट्रू है तो उसका मतलब क्या हुआ, then this must belong, यानी every power of tn belongs to the span of these, तो उसका मतलब span of, it means then span of t1 t2 so on so forth is the same as span of tn1 tn2। अगर मैंने ये दिखा दिया तो इसका मतलब अगर ये सीक्वेंस फिर टोटल है तो ये सीक्वेंस भी टोटल है, क्योंकि we know that L2101 is the closure of this, लेकिन अगर span of this is equal to span of this, then this sequence, जो सब sequence थी original की, should be total in L201 and hence it should be total in C01। मेरी बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कि as n approaches infinity, the minimum distance from this any t raised power m, any monomial, to the space generated by this subsequence should be zero, और minimum distance तभी होगी from a vector to a closed subspace if that vector belongs to that subspace, otherwise नहीं होगी। So that means tm, any power of any monomial would belong to the span of this thing, and from that I will get what जो मुझे चाहिए। Okay, so that is our क्या बोलते हैं रोड मैप to prove this theorem, ठीक है? Okay, now that is, मैं ऐसे लिखूंगा, that is limit k approaches infinity dk, that is 0 is equal to this thing, but dk square भी फिर 0 करेगा ना, अगर मिनिमम डिस्टेंस जो dk है तो उसका अगर वो 0 अप्रोच करती है तो उसका स्क्वायर भी 0 बन जाएगा, but we know that this is actually limit k approaches infinity, gram determinant of the vectors t raised power m tn1 up to tnk divided by जो हमने अभी किया था t sub n, जिसको हमने g प्लस कहा था, यानी हमने वो वेक्टर उसके साथ जोड़ दिया जहां से हम मिनिमम डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं टू द स्पैन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स।
टी सब एन के, है ना, ये हमें दिखाना है। अगर हमने दिखा दिया ये 0 है तो डी के 0 है एंड वी आर डन। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। अगर हमने ये दिखा दिया तो दैट मीन्स द सीक्वेंस इज टोटल। अब इसमें करनी है कैलकुलेशन। सो लेट्स सी। सो g of t raised to power m tn1 tn2 tnk is equal to inner product of tm tn1 comma to tm comma tn2 so on and so forth tm tnk. पहला रो, then I would have tn1 मैंने कुछ गलत लिख दिया। यस, क्या लिखा मैंने गलत? यहाँ m से शुरू करना है ना हमें। रबर चाहिए मुझे, ये क्या होगा? तो यहाँ tm होना चाहिए, tn होना चाहिए। ओके, it should be tm t sub n1 t raised to power n1 then t raised to power n1 and t raised to power, of course हमने शुरुआत कहाँ से की थी? यहाँ m है तो यहाँ m आना चाहिए, then tn1 and tn1 tnk so on and so forth, then t raised to power nk sub t raised to power m tnk comma tn1 and tnk t raised to power nk, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट। now what we do इसको इवैल्यूएट करने का काम, इस डिटरमिनेंट को, वो थोड़ा है लंबा चौड़ा। तो once I have done that, ओके, और नीचे जो है अब है ना, और व्हाट इज जी? देखो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखूंगा क्योंकि अब मुझे फिर दूसरी बार लिखना पड़ेगा, तो मैं ये इक्वालिटी यहाँ लगा देता हूँ बीच में, यही है इसमें कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत है। तो मैं लिखूंगा यहाँ जी t raised to power m t raised to power n1 t raised to power nk divided by g t sub n1 t sub nk। यहाँ मैं दूसरा डिटरमिनेंट साथ में लिखता हूँ। So this would be tn1 tn1